Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for our exams. As we all know, from Monday to Thursday 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 30th October, okay, and 2023, and we are here with the Hindu analysis of Monday, that is 30th October. Okay, tomorrow, that is 31st October, is the birthday of a very famous person. Can anyone tell me? अगर नहीं पता है, so go and find out and write it in the comment section. ठीक है कि कल tomorrow there is a birthday of a very famous person. Go and find out. Okay, so there are two articles on the first page. One talking about unfortunate train accident in the state of Andhra Pradesh. We'll be discussing about it. 8 feared dead, 32 injured in a train accident in Andhra Pradesh. Then here there's an article about blast killed 2, injured 41 at prayer meet in Kochi, near Kochi. Kochi is a place in actually the state of Kerala. Okay, so these are the two articles we will be discussing. So let's start with this one. 8 feared dead, 32 injured in train accident in Andhra Pradesh. Okay, so basically they are saying that there's a place called as 𝗟𝗂𝗴𝗹 station, 36 kilometers from Visakhapatnam, 𝗟𝗂𝗴𝗃 district. So Visakhapatnam काफी famous जगह है. I hope you are aware. So if this is the state of Andhra Pradesh, somewhere here is actually the place where the accident happened, which is ठीक है. So train collided on the Howrah-Chennai line. Now, yes, very good. Nandana, Nandita, you all are right. I was asking the question that 31st October is the birthday of a very famous person. His name is Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗏. And yes, Unity Day is National Unity Day is celebrated in his memory. Very good. You are knowing about it. मैं कुछ और चीजें कल पूछूंगा. So in tomorrow's class, I'll be asking something more about 𝗟𝗲𝗴𝗃 𝗵𝗵 and all. ठीक है? So National Unity Day is related. So there is a idol or a statue that is made in his memory. I hope you are aware of that. So go and find out in which place it is. These things I'll be discussing. ठीक है? हाँ. Okay. So we were discussing about it. Vizianagaram is actually in Andhra Pradesh. यहीं पे जैसे we were discussing about the train accident. So this is Andhra Pradesh. This is Vizianagaram. Okay, where the accident has happened. And this is actually in the Howrah-Chennai line. Okay, so let me tell you. If you see it, here is Kolkata, and one of the station of Kolkata is Howrah. I hope you are aware. And here is Chennai. So there's a very famous line connecting Howrah and Chennai. Railway line. So here actually the accident has happened. Now, why it is important? Because you remember the Balasore accident. Balasore is actually somewhere here in the northern portion of Odisha. Balasore, or sometimes called as Baleshwar. So there, this was actually an accident that happened, I think, around June, in the first week of June. So you remember that. So it also had happened on the same Howrah-Chennai line. And here is also the recent accident of Vizianagaram. Vizianagaram. Okay, so this also happened in the same Howrah-Chennai line. Okay, so you should be knowing it. Just have a basic idea about it. So that is what at least 9 people were killed, 32 injured, and all these are the things coming in the news. Okay, so as 2 passenger train collide. तो इस तरह कुछ था कि एक शायद रुकी हुई थी, वो पीछे से आगे दूसरे ने धक्का मारा. Special passenger train between Visakhapatnam and Palasa had stopped on the main line between Alamanda and 𝗟𝗂𝗴𝗃 due to no signal when a Vizag Rayagad passenger train hit from behind. मतलब एक ट्रेन रुकी हुई थी, ठीक है, कुछ सिग्नल का इशू अगर होगा तो पता कर बाद में पता चलेगा, इंक्वायरी होगी तो, और पीछे से एक ट्रेन ने आके हिट कर दिया इसको उसी मेन लाइन पर. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड. ओके, नाउ अब क्या होता है जब एक्सीडेंट होता है तो इंक्वायरी बैठती है. ओके, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट. सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज CSR, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी. CRS इंक्वायरी इज सेट अप. That is what we call it as Commissioner Railway Safety. Okay, जैसे जब बालासोर एक्सीडेंट हुआ था तो भी ये न्यूज में था. And this Commissioner Railway Safety is not under Railway Ministry. It is under some other ministry. So can anyone write in the live chat that Commissioner Railway Safety is under which ministry? It is not under Railway Ministry because it is supposed to look after the any failures in the railway and all, or if there is any accident happen and all. So इसको खास करके CRS को किसी और मिनिस्ट्री में डाला गया है. कोई बता सकता है?
where do you find the CRS headquarter? Under which ministry you will find it? So which this we had discussed it during Balasore accident. Yes, so आपने very good. So it is actually under Ministry of Civil Aviation instead of Ministry of Railways. हवाई जहाज मंत्रालय के अंदर में. So separate ministry में रखा गया है to ensure the independence. That influence should not be done, है ना? So to ensure that the CRS is under the separate ministry, that is Civil Aviation. Yes, Nandita, you are right. Very good. So you should be knowing these things because there have been some incident and all. So these things can be asked in the exam. Now first page में article blast kills 2 in JU'S 41 at prayer meet near Kochi. Okay. देखो actually क्या है यहाँ लिखा है Jehovah's Witness, ये वाले news में आ रहा था term. So what is this actually? This is actually a sort of, you can say, not exactly, but yes, आप कह सकते हो, it is a sect of Christianity. इस तरह से आप समझ सकते हो. या एक वर्जन है या एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, उनको हम लोग Jehovah's Witness कहते हैं. Okay, so that is what you should be knowing it. So at least 2 successive explosions ripped through a crowded Jehovah's Witness prayer at 𝗟𝗏𝗃 in Kochi in Kerala and all. So these are the things being talked about. So let me show you. So this is the state of Kerala. And here is the Kochi. Okay. So just have an idea about it. And the police have arrested a suspect called as Dominic Martin, a disenchanted member of the religious group, as a suspect in this case. So basically, अभी शक किया गया, अभी sure नहीं है. So there's a person who has been arrested in this regard. So let's see. Let the investigation go on. They may have booked him under UAPA, paving the way for a possible NIA probe. तो हो सकता है कि शायद इसमें NIA probe भी हो. So UAPA, Unlawful Activities and Prevention Act, has been invoked in this regard. Okay? Yes. CRS का full form होता है Commissioner Railway Safety. Commissioner Railway Safety. Okay? Yes. So this inquiry is done. CRS is an officer who conducts an inquiry whenever any accident happens. Okay? So just have an idea. थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना भी. This is the 2025 comprehensive course. If you are planning for next year, you can go for this course. You can call on this number 95388 Okay? Yes. And this is a test series. I request you all to please attempt all the tests. And we are providing the video solutions. So do watch the video solutions as well, because that would be beneficial for you. Okay, let's talk about editorial. So this is the editorial A War Where Humanity is on Trial. So this has been written by Sonia Gandhi. She is one of the leader of the opposition party Congress. And she has written about this actually, this war and all, the Israel-Palestine war and all. Okay, so this is a question for you, which I have taken it from her article, the first passage. Please read this question carefully and then answer it. What is the right answer to this question? So ये passage ये article जो है मैंने उसी article से निकाला है, सोनिया गांधी जी के article से. And I have just replaced X. So what is X? You have to tell me. And I think it is easy because we have discussed it in the past. So you should be knowing about it. देखो 58th anniversary of X. तो 2023 में अगर आपको नहीं भी पता तो 50 घटा दो. So it means some war would have happened in 1973. Okay. Yes, very good. Saryan, Sari, Nandana, Harshvardhan, Swapnil. Yes. 6-day war जो था 1967 वाला war हुआ था, उसको 6-day war कहते हैं. यौम किपुर वॉर इज 1973 डे वॉर 1973 में, ठीक है. यौम किपुर वॉर भी कहते हैं, रमजान वॉर, अक्टूबर वॉर, यौम किपुर वॉर, या फोर्थ अरब इजरायली वॉर. दीज आर द टर्म्स यूज्ड. ओके, सो दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. क्रीमियन वॉर को इंडिया इससे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से लेना देना भी नहीं. ओके, तो आप अपने से भी लॉजिक लगा सकते हो. व्हाट इज होलोकॉस्ट? कैन एनीवन टेल मी? दिस टर्म इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. So I'm waiting for that also. कोई बता दे कि what is Holocaust? Because it was mentioned in this article. So here the right answer is Yom Kippur War. So B is the right answer to this question. So she's talking about the 7th October, this and all, the violence and all. This strategies, however, being compounded by Israel's military indiscriminate operation around Gaza and have led thousands of dead. So she's saying that after that Hamas attack, there have been attack on Gaza, common people and all. A lot of people have died and all. Humanitarian problem is there. So that is what she's talking about. Indiscriminate destruction is happening. Medical facilities are unable to cope with vast humanitarian crisis that has befallen the population. The denial of water, food, electricity. So no water, no food, no electricity is being given and all.
The outside world, particularly those who want to help, is largely blocked out of Gaza. So there is a blockade also. It's very difficult to go and help and all. So these are the things and all. The term Holocaust is used. Yes, Namra Aftab, you are very close. Actually, Holocaust is a term. इसका आंसर तो B है. Holocaust is a term used for Hitler actually killing, I think, 6 million Jews. So this term is specifically actually termed as Holocaust. This is mentioned in this article, and you should be knowing it because it too comes in the news. तो आपको पता होना चाहिए Holocaust का भी मतलब. ठीक है, याद रखिएगा. Okay, so the prospect for the future are ominous. Ominous मतलब है कि worrying है कि अभी we are not sure what will happen and all. Prospects मतलब future में और क्या होगा. So senior Israeli officials have spoken of destroying and depopulating large population of Gaza. Israel defense minister has referred to Palestinians as human animals. So that is what she is talking about and all. Humanity is on trial now. That is what she is saying. ये headline भी उनका article का. We are collectively diminished by the brutal attacks on Israel. We are now also all diminished by Israel's disproportionate, equally brutally response. So yes, so that is what she is saying. Even if the Israel is responding, so by attacking the common population and all is not correct and all. So that is what in its determination to destroy Hamas, it is actually killing ordinary people. यानी आम आदमी लोगों को नुकसान हो रहा है जब wars हो रहा है या missiles वगैरह से गाजा में and all. That is what she is talking about. Okay. So there's been long history of the suffering of Palestinians is ignored and all. तो यही सब बता रहे. That is what it is. Okay, let me show the map. Here is India. This is Israel. And so this is Israel, and this one is this one is Gaza, and this one is West Bank. Okay, I hope you are aware of these things. Okay, there can be no peace without justice. That is what she is talking about. Israel's unremitting blockade for over a decade and half has reduced Gaza to be. So this is actually many times called that Gaza is an open air prison actually for its 2 million inhabitants, packed with dense cities and refugee camps and all. So these are the things being talked about. Peace will come only if the war led by countries that have the ability to influence policies and events and all. Now, two-state vision की बात हो रही है. That is what she is talking about. Now, so even India has also recently, आपने देखा होगा, Ministry of External Affairs said India supported establishment of sovereign, independent and viable state of Palestine. क्योंकि एक term काफी चलता है two-state solution for Israel-Palestine conflict. It means the world should recognize both Israel and Palestine as separate nation. For example, Israel is recognized by United Nations as a country, but not Palestine. Still not considered as a full-fledged country. But India's stand is, India reiterates call for sovereign, independent, viable state of Palestine. This is India's government stand. So India's long-standing and consistent policy on Palestine remains unchanged. मतलब बहुत दिन से इंडिया का ये स्टैंड रहा है हमेशा से, और आज भी यही स्टैंड है कि सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन होना चाहिए. इसका मतलब है कि पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा. सो इवन टुडे आल्सो दिस इज इंडियाज स्टैंड that Palestine should be recognized as a independent country. That is what is in line with two-state solution. ये कभी-कभी एग्जाम में पूछते हैं कि the term two-state solution refers to the conflict between which two countries. तो इस तरह ऑप्शन में होगा इजराइल, पैलेस्टीन, वो वाला आप चूज कीजिएगा. ठीक है. Okay, so these are the things. We value our friendship with the people of Israel, but this does not mean we erase our memories and the painful history of forced possession of Palestinians and all. तो ये बता रहे हैं कि हाँ, इंडिया का इजराइल से अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, बट स्टिल हम लोग जो है उसको ना भूलें. द पेनफुल स्टोरी हिस्ट्री ऑफ फोर्स पोजीशन ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड ऑल, दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं इजराइल फ्रेंडशिप विद पीपल ऑफ इजराइल और फ्रेंडशिप विद इजराइल, सो दिस क्वेश्चन बिकम्स एविडेंट एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको 8-10 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को. द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट दे कैन गिव दिस क्वेश्चन. इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, बिकॉज हमको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यस दे विल बी गिविंग दिस क्वेश्चन. क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन न्यूज में, और आपको ईयर भी बताना है कि कौन से ईयर में ये हुआ था. व्हेन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल. इन्हें ओपनली डिक्लेयर किया कि वी आर हैविंग रिलेशन विद इजराइल, यानी दोनों ने एक दूसरे ने ambassadors exchange किया है ना. So both exchange ambassadors, set up their embassies in each other's capital and all. So who was the prime minister at that time and in which year this happened? This is very 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 important.
Yes, Swapnil has answered it that the year is 1992. Very good. And who was the prime minister at that time? ये दोनों बहुत ज़्यादा important है because it is in the news. So the probability is very high that this question can be asked. बताइए. And who was the prime minister at that time? Yes, हर्षवर्धन is saying B9, B. हर्षवर्धन, स्वप्निल is saying B. देखो 1992 तो आपने सही आंसर बताया. Yes, नितिका सिंह, very good. एंड 1992 में प्राइम मिनिस्टर को जब उन्होंने कह दिया कि 1992 तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, इतना तो आप समझ गए होंगे. अगर आपको थोड़ा बहुत पता होता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी 1998 से 2004 के बीच थे. थोड़ा कुछ दिन के लिए 1996 में बने थे, बट मोस्टली दिस इज हिज टेन्योर. सो द राइट आंसर इज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बी इज द राइट आंसर. इसको स्टार मार्क कर लेना और याद रखना बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इंडिया इजराइल इंपॉर्टेंट एमिड ग्लोबल चेंज. देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट ईयर जनवरी की न्यूज है, 30 साल कंप्लीट हुआ था. ठीक है, सो 1992 को अगर आप 30 ऐड करोगे तो 2022 होगा. यस और नो? इफ यू ऐड 1992 plus 30 it becomes 2022. So last year we had completed 30 years of India Israel relationship. देखो यहाँ लिखो, इस आर्टिकल में लिखा है, देखो ये है ना जनवरी 2022 की आर्टिकल है. ओके, the importance of India Israel ties has further increased in world facing major risks. देखो ये 29th January 1992 लिखा है. The speech by the Prime Minister marked 3 decades since New Delhi established formal diplomatic ties with Tel Aviv. मतलब by Tel Aviv में आप समझ रहे हैं एम्बेसी है इंडिया की, है ना. When PV Narasimha Rao was the Prime Minister. लिखा है कि नहीं? So it is very 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 important. इसको स्टार मार्क कर लेना. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, the probability is very high that they can give this question. So आप इसको स्टार मार्क कर लेना और याद रखना इससे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, फिर ये पूछ सकते हैं कि हु इज करेंट इंडियाज एम्बेसडर टू, ये सभी मैंने पढ़ाया. इंडियाज एम्बेसडर टू इजराइल अभी कौन है? सो गो एंड फाइंड आउट दीज थिंग्स. ओके, दिस कैन बी आस्क्ड. अभी रिसेंटली एक और हुआ था, यूएन जनरल असेंबली में वोट हुआ था गाजा वॉर पर, बट इंडिया एब्सटेन्ड. एब्सटेन का मतलब होता है नाइदर सपोर्ट नॉर अपोज, है ना. ना ही फेवर में वोट किया ना ही अपोज में, एब्सटेन करिए, नहीं कि हम वोटिंग में मतलब एक तरह से भाग नहीं लिया ऑफिशियली. यूएनजीए वोट ऑन गाजा. एब्सटेंशन मतलब होता है कि मतलब नाइदर यस नॉर नो, इससे समझ लेना ना. So India Defense Abstention says the resolution should have refer to October 7 attacks as well. Okay, yes. देखो ये ना, UN General Assembly adopts a resolution calling for humanitarian truce of civilian population. आप देख सकते हो. So for में 120, against में 14 और 45 abstained. इसी 45 में से एक इंडिया भी था. Okay, so that is what you should be knowing about it. Yes. Indian ambassador to Israel is Mr. Sanjeev Kumar Singla. Good. Nandana Gauri Sethi. Very good. Huh? So these things you should be knowing about it. There are voices on both the sides speaking for end to this madness. मतलब दोनों साइड में ऐसे लोग हैं जो अपील कर रहे हैं कि नहीं वॉर रुक जाना चाहिए, इससे कॉमन मैन का ही नुकसान होता है. Many Israelis have lost their friends and families in the terror attacks. Still believe that the dialogue with the Palestinians is the only way forward. बहुत सारे ऐसे इसराइली है जो कि 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ था उसमें उनके रिश्तेदार का डेथ हो गया, लेकिन तो भी वो मानते हैं कि वॉर जो है वो सोल्यूशन नहीं है. पैलेस्टीनियन से नेगोशिएट, बातचीत करके डायलॉग के जरिए चीजें सॉल्व करनी चाहिए. दैट इज व्हाट she is referring to, the author is referring to. It is unfortunate that many influential countries are being wholly partisan when they should try their utmost to end the war. मतलब वो लिख रही हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेटली कई जगह कई सारे कंट्री पार्टीशन यानी पक्ष ले रहे हैं एक दूसरे साइड का एंड ऑल, जबकि कोशिश ये करना चाहिए कि जंग खत्म हो जाए. That is what she is writing, the author is writing. Okay. A panel should give more time to study new criminal laws. Actually, अब देखो ये क्या है, parliamentary committee appears to be quite close to finalizing its report. देखो एक्चुअली 2-3 नई चीज बनने जा रही है, आपको पता है. आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों का मतलब में काफी सारे ओवरहॉल होगा, चेंजेस होगा. जैसे भारतीय न्याय संहिता है ना, अब इसका नाम पीएनएस हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता. Then CRPC which will replace IPC. Then भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा CRPC. Okay. Similarly, Indian Evidence Act का नाम चेंज हो जाएगा, देखो लिखा होगा. Third bill, that is भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय साक्ष्य बिल. Okay, having in lieu of the Indian Evidence Act, तो Indian Evidence Act की जगह भारतीय साक्ष्य बिल हो जाएगा. Having begun this deliberation on 44th August and having held only 12 sittings, there may be question about the adequacy of scrutiny. तो ये authors ये लिख रहे हैं editorials के कि सिर्फ 12 सिटिंग हुआ और होना चाहिए था. मतलब he is actually the author is focusing that there is need to be more deliberation, discussion and all.
और ज्यादा डेलिब्रेशन और डिस्कशन होना चाहिए था इस बिल को लेकर, मतलब दैट इज व्हाट मेन फोकस। देखो मैंने बताया था जो साइड वाली आर्टिकल होती है इसमें ऑथर नहीं मेंशन होता है, सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ओपिनियन ऑफ एडिटर्स, या द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल स्टैंड जो होता है वो एडिटर्स का ओपिनियन जनरली होता है ना, जो भी एडिट पेज के एडिटर्स होते हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर राइटिंग। The whole point of introducing these new criminal codes was to bring about a major overhaul of a body of law deemed to be too colonial in orientation. So the main मकसद ये था कि बहुत सारे changes लाने के लिए overhaul that deemed to be too colonial in orientation, यानी बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा IPC वगैरह का ये 1816 बना था, तो सब बहुत सारे colonial influence है इसमें, है ना। सो बहुत सारे colonial laws है या influence ब्रिटिश टाइम के है, उसको चेंज करना मेन मकसद था। ओवरहॉल यानी पूरे बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पे चेंज करना, दैट वाज द मेन इंटेंशन, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना। The panel should have hold sittings across the country and listen to the lawyers, activists on the details of various sections, besides member of subordinate judiciary who actually works the law and procedure laid down in the courts. अब ऑथर का ये मानना है कि जो पैनल, जो पार्लियामेंट्री पैनल बैठी थी, उसको चाहिए था कि लॉयर्स और एक्टिविस्ट से मिलने के लिए, मतलब दे शुड हैव कॉल्ड लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट to give their opinion and the subordinate judiciary, people from subordinate judiciary. मतलब मैंने बताया है ना कि एक subordinate judiciary होता है, I have told you in the paid classes मैंने पढ़ा है subordinate judiciary, उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो subordinate judiciary यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशरी होती है ना। I hope you are aware of that. Okay. Yes, there is some sort of noise from the background. I'm very sorry for it. Okay. Okay. Yes. So basically, consequently listen to the lawyers and activists. तो इनका ये ऑथर का कहना का मतलब है कि लॉयर्स, एक्टिविस्ट और जो सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस जो होते हैं ना, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड ऑल, उनकी भी राय सुननी चाहिए थी। दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। द डिमांड फॉर मोर टाइम टू एग्जामिन द रिपोर्ट हैज इमर्ज्ड बिकॉज़ द ड्राफ्ट रिपोर्ट वाज सेड टू हैव बीन सर्कुलेटेड इन इंग्लिश ओनली डेज बिफोर इट वाज शेड्यूल्ड। तो ये क्या जा रहा है कि इंग्लिश में, हिंदी में, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। सो नो नीड टू गो इन डिटेल्स एंड ऑल। ओके, देयर इज नो रीजन फॉर सच हेस्ट, मतलब हेस्ट का मतलब जल्दबाजी, हरी। So the author is saying that these laws should not be approved in hurry. Rather, we need more and more deliberation and discussion. यानी जल्दीबाजी में नहीं पास होना चाहिए, और ज्यादा स्क्रूटनी, लिखा ना, डीप स्क्रूटनी। So more and more scrutiny needs to be done. Okay. So for instance, the scope for misuse of any law in the new definition, the desirability of introducing new offences such as hate speech, and whether there is further scope for procedural reform and all. अब ये बता रहे हैं कि हाँ, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हेट स्पीच, उसका डेफिनेशन जो है वो क्लियर कट है कि नहीं, ये और भी चीज है, उसका डेफिनेशन जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ताकि स्कोप ऑफ मिसयूज शुड बी रिड्यूस्ड एंड ऑल। ओके, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नाउ फिर एक और आर्टिकल, गिव अप इम्प्रॉपरिटी, डेमोन्स्ट्रेट इम्पार्शियलिटी। सो इट इज बीन रिटन बाय अ फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड ही इज एक्चुअली कोटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. If someone feels that this was a stricture passed by a local court against a government servant, they are mistaken. क्या कहा था? The order of this court has to be followed. I am concerned about the dignity of our court. So CJI ने थोड़ा सा मतलब सख्ती से बोला था, I am concerned about the dignity of our court. If someone feels this was a stricture passed by local court, then it's wrong. मतलब एक्चुअली क्या ये बोलना ये चाह रहे हैं कि CJI ने थोड़ा सा हार्श मतलब सख्ती से कहा था कि अदालत का ऑर्डर फॉलो किया जाना चाहिए, और हम कंसर्न है डिग्निटी ऑफ आवर कोर्ट से रिलेटेड। तो ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने बोला था, मतलब वही बोल रहे किसी लोअर कोर्ट के जज ने नहीं बोला था, या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बोला था, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था। सो आई होप यू आर अवेयर। सो महाराष्ट्र डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन एंड ऑल आपको मालूम होगा। आई होप यू आर अवेयर दैट देयर इज अ डिस्क्वालिफिकेशन इशू एंड ऑल रिगार्डिंग द शिवसेना गॉट स्प्लिट 1 or 2 years बैक, है ना, आपको याद होगा। After that, things were going on. So the Chief Justice of India has said that Maharashtra Speaker should quickly decide these things and all. So that was being quoted here. Okay. The office of the Speaker emerged in medieval Britain when the House of Commons needed a spokesman. तो अब Speaker की history पे जा रहे हैं, ठीक है। House of Commons जो होता है, देखो एक्चुअली ब्रिटेन में 2 हाउस होता है ना, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, ओके, और दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ओके,
हाउस ऑफ कॉमन लाइक वेरी सिमिलर टू इंडियाज लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड वेरी सिमिलर टू इंडियाज राज्यसभा, हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं होता है बट नियर टू दैट आप समझ सकते हो। सो हाउस ऑफ कॉमन इज लाइक लोकसभा, आप समझ लो, ठीक है। सो ही इज गोइंग बैक इन हिस्ट्री एंड टॉकिंग अबाउट इट। The middle of the 19th century, the speaker has been considered to be the impartial chairman of House of Common. Impartial मतलब neutral. So पहले ही समझा जाता था कि House of Common के जो speaker वो neutral रहेंगे, नहीं biased नहीं रहेंगे किसी भी political party के towards. Okay? So that is what they are talking about. Now there is a question for you talking about speaker. Which of the following is not a power of speaker? And these are our options. Read it carefully and then answer it. बताइए, what is the right answer? Which of the following is not a power of speaker? What is the right answer? What is the right answer? This is very easy. It's not very difficult. Read it carefully and then answer it. जल्दबाजी में नहीं आंसर कीजिएगा। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्पीकर का पावर नहीं होता। कुछ हद तक इस आर्टिकल में डिस्कशन भी है। देखो, पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, यस, स्पीकर डिसाइड्स कि कौन सा बिल मनी बिल है और नॉट। पावर टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ हाउस, इसी पे तो बहुत बात होती है कि डिस्क्वालिफिकेशन 10 शेड्यूल के अंदर है ना, स्पीकर डिसाइड करते हैं किसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। पावर टू पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग एन एमपी टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, क्या एक स्पीकर के पास पावर होता है कि डिक्लेयर कर दे कि एक एमपी जो है कन्विक्टेड है। द पावर ऑफ कन्विक्शन ऑलवेज लाइज विद द कोर्ट, ये सिर्फ अदालत के पास पावर होता है किसी को प्रूव करे कि ये क्रिमिनल है कि नहीं। स्पीकर के पास नहीं है, डिसीजन होता है, पावर होता है। दिस इज दैट कोर्ट व्हिच डिक्लेयर्स समवन कन्विक्टेड। बी केयरफुल। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मिस्टर राहुल गांधी वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ लोकसभा एमपी। व्हाई? बिकॉज द कोर्ट, द लोअर कोर्ट कन्विक्टेड हिम। कन्विक्शन अदालत हमेशा करती है, ठीक है। सो बी केयरफुल हियर। हाँ, पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रेजोल्यूशन, यस, वो स्पीकर रिजेक्ट कर सकते हैं रेजोल्यूशन। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जैसे एक केस, ये स्पीकर का नहीं है, राज्यसभा के चेयरमैन का केस है, जो कि देखो स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन पावर बहुत हद तक सिमिलर भी होता है। ये 2018 केसेस, एट दैट टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज जस्टिस दीपक मिश्रा। सो पीपल वेंट, एक्चुअली सम पीपल वेंट फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर, रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके लिए एक पिटीशन मतलब रेजोल्यूशन लेके गए थे एमपीज। 50 MPs को साइन करना होता है राज्यसभा एमपी को, and they sent the resolution, gave the resolution to the vice president or the Rajya Sabha chairman at that time, Mr. Venkaiah Naidu. But Venkaiah Naidu rejected the petition. तो yes, स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास इतना पावर होता है कि वो पोजीशन या वो जो है रेजोल्यूशन को रिजेक्ट भी कर दे, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, ये कहना कि पावर ऑफ टू डिक्लेयर एन एमपी एज कन्विक्टेड, दिस इज रॉन्ग। दिस इज ओनली विद द पावर ऑफ कोर्ट, द कोर्ट हैज पावर टू डू इट, ठीक है। तो ये आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग। एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट 2 स्पीकर्स, 2 ऑफ इट्स मेंबर्स एज स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। एक स्पीकर होते हैं, एक डेप्टी स्पीकर होते हैं, लेकिन अभी करेंटली वी डू नॉट हैव एनी डेप्टी स्पीकर इन लोकसभा। ओके, सो यू शुड बी नोइंग इट। तो इनका मेन काम क्या होता है? मनी बिल को सर्टिफाई करना है ना, डिसाइडिंग ऑन डिस्क्वालिफिकेशन इन द 10th शेड्यूल। दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। ओके, provides for suspension of members of misconduct in the house. It has been noticed that speakers in the house misuse these provision often than not against the opposition members. अब ये बता रहे हैं कि कई बार ऐसा एलिगेशन लगा है कि स्पीकर्स के अगेंस्ट की सिर्फ ऑपोजिशन मेंबर्स के अगेंस्ट यूज किया गया है। सो दीज आर सम ऑफ द एलिगेशंस दैट स्पीकर इज नॉट न्यूट्रल। इससे पहले भी एलिगेशन लगा। सो इज कोटिंग एन एग्जांपल that Adhir Ranjan Chaudhary was suspended and all, but at the same time Ramesh Biduri was not suspended. So these are some of the examples the author is quoting and all. The speaker is the authority to refer bills introducing the parliamentary standing committee. Yes. और भी बहुत सारी चीज में स्पीकर हेड होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है बिल रिकमेंड रेफर करती है स्पीकर को। बहुत सारे जो एडवाइस जो कमेटी होती है, इन हाउस कमेटी लोकसभा की, उसके चेयरमैन हेड होते हैं स्पीकर, उसके मेंबर स्पीकर चूज करते हैं। सो स्पीकर हैज अ लॉट ऑफ पावर एंड ऑल। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो इम्प्रॉपरिटी, इम्पार्शियलिटी, यानी मेन चीज ये है कि स्पीकर को न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली स्पीकर इज कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कोई भी स्पीकर जो होते हैं वो जनरली रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और स्पीकर का बहुत सारे डिसीजन ऐसा होता है जो न्यूट्रल होना चाहिए, बिकॉज
the post of a speaker is supposed to be neutral. Okay, so and neutrality is very important to ensure that in parliament things should be in order. So these are the things being talked about. Now the next question is, this is a question for you. Please read it carefully and then answer it. X पूछा जा रहा है. What is X? You have to tell me. देखो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. I would suggest it's not that much difficult. इस चारों एजेंसी का आपने नाम तो सुना होगा. I hope you must have heard the name of these 4 agencies. And I have again told you, मैंने कुछ हिट्स ट्रिक्स बताए हुए कि कीवर्ड्स पकड़ा कीजिए. आप कीवर्ड्स के माध्यम से with the help of keywords you will reach. It is a domestic law enforcement agency. अब किसकी बात हो रही है I don't know. And economic intelligence. अब देखो वर्ड क्या लिखा, economic intelligence. Responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime. हर जगह economic की तरफ इशारा है. ठीक है. Focuses on investigating, prosecuting cases related to money laundering, foreign exchange violation and economic offense. हर जगह economic की बात हो रही है. तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब आप समझ सकते हो. देखो एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अगर ड्रग्स वगैरह रिलेटेड बात हो रही होती, ड्रग्स नार्को इस तरह का अगर टर्म लिखा होता, इलिसिट ट्रेड, ठीक है, तब आप एनसीबी की तरफ जा सकते थे. एनआईए जो टेरर रिलेटेड केसेस, अगर ये सब वर्ड लिखा रहता. सीबीआई जो जनरली करप्शन वगैरह से रिलेटेड, हालांकि टेरर रिलेटेड भी होता है, टेरर रिलेटेड करप्शन रिलेटेड केसेस एंड ऑल. तो ये बहुत मुश्किल नहीं है. इट्स वेरी इजी. सो डी इज द राइट आंसर. यस. नंबर आफ्ताब, यस. डायरेक्टर इज मिस्टर राहुल नवीन, यस. सानिया अंसारी, क़ौरवी शर्मा, यू आर राइट. निशिता अरवा, यस. So that is what is being talked about. It is a domestic law enforcement agency and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws. It comes under Department of Revenue, Ministry of Finance. So D is the right answer to this question. तो actually इसमें थोड़ा सा जो author है, these are editorials again. मतलब the authors को, the Hindu editors का opinion होता है इसमें. So they are actually questioning the impartiality of the probe, means impartiality of enforcement directorate. Impartial मतलब neutral होना. So that is what they are talking about, that there have been allegation against enforcement directorate of actually raiding against opposition and all. तो ये सब चीजें, इसमें उतना डिटेल नहीं जाना है. Just go and read it. Okay. हाँ, ईडी के अंदर जो लॉज है, जैसे पीएमएलए है, फीमा है, यस, FEO है, एक एक्ट है. So these are the laws under which it works. ठीक है. The next one is an unfolding economic tragedy. Okay. Now, so there's an article from here. तो मैंने इससे एक पैसेज उठाया है और ये क्वेश्चन है. So please read it and then answer it. बताइए. So basically, again, it is talking about the GDP growth and all GDP numbers. तो देखो हर कुछ महीने में GDP numbers, GDP growth की परसेंटेज चेंज होते रहते हैं, तो वो परसेंटेज नहीं याद रखना है. बट प्राइमरली देखो ये क्या चीज की तरफ इशारा कर रहा है, ये मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया है. A reflexive cheer of India as the fastest growing major economy rang out when the dash announced in it late August that GDP had increased in April etc. by this %. बेसिकली वो ये इशारा कर रहा है कि कौन सी एजेंसी है जो कि जीडीपी का डेटा रिलीज करती है. अगर आपको पता होगा, I have taught this in paid classes. The right answer is NSO, National Statistical Office. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और आपको पता होगा ये दोनों को मर्ज करके ये बनाया गया है. सो द राइट आंसर इज सी. जैसे 2019 का न्यूज़ है ना, गवर्नमेंट मर्ज CSO विद NSSO, CSO विद NSSO टू फॉर्म NSO. ठीक है, ये था. सो द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर. ये मैंने कई बार पेड क्लासेस में पढ़ा है. दैट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज कंसर्न अबाउट द GDP एस्टिमेशन और द ग्रोथ ऑफ GDP एस्टिमेशन एंड ऑल. तो इसी से रिलेटेड चीजें हैं, है ना. देखो इनकी वेबसाइट में लिखा भी है, called as NSO consists of CSO and NSSO. ठीक है, ये सबको मर्ज करके फिर NSO बना दिया गया. सो ये मॉस्पी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ओके, यस, वेरी गुड. नंदना, सानिया अंसारी, यू आर राइट. इजराइल कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ गाजा. तो यही आपको मैंने बताया था कि ये वाला गाजा है. So this is very much controlled. इसको open air prison भी कई बार authors ने लिखा है, open air prison and all. Very much controlled by Israel and all, as far as number of people coming and outgoing is concerned. So these are other things. तो वो कुछ charts, diagrams वगैरह बता रहे हैं कि number of people coming in Gaza, exit of people in Gaza and all these other things. You should be knowing it. Okay.
The next, as Canada India rift is painful for common friend Australia sees envoy. तो एम्बेसडर का एक्चुअली सुहासिनी हैदर मैम ने इंटरव्यू लिया होगा एम्बेसडर का, सो उसी में वो बता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर का एक्चुअली क्या है। देखो इंडिया, कनाडा और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग गुड रिलेशनशिप विद इंडिया एंड कनाडा बोथ। ऑस्ट्रेलिया का दोनों से अच्छा रिलेशन है। अब ऑस्ट्रेलिया को के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इससे हम लोग के लिए बहुत तकलीफ दे, बिकॉज ये दोनों हमारे फ्रेंड है। तो अगर इंडिया कनाडा के बीच रिलेशन खराब हो रहा है, सो इट इज नॉट वेरी गुड फॉर अस, वी आर पेन्ड बाय दिस एंड ऑल। दैट इज इनवॉय में तो वही एम्बेसडर को इनवॉय भी लिखते हैं, राजदूत जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना। सो दैट्स व्हाट देयर वाज एन, ठीक है। सो इसको आप पढ़ लेना। देन चाइनीज पार्टी डेलीगेशन विजिट सोलोमन आइलैंड। अब देखो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। The trip comes a week before Australian Prime Minister is set to visit Beijing and all. अब देखो मैं दिखाता हूँ, लास्ट ईयर ये काफी फेमस हुआ था अप्रैल में। Why has the China Solomon Island deal become the latest flashpoint between China and US? देखो why it is strategically very important। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे सोलोमन आइलैंड है। ओके, और क्या हुआ था कि चाइना और सोलोमन आइलैंड ने 1-2 साल पहले डील कर लिया था। अब उसमें अब वी आर नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली द डील इज बिकॉज इट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक मच। तो इसमें कुछ चीजें आ रही है थी कि शायद जो है चाइना जो है शिप लगाए यहाँ पर, अपनी नेवल शिप अलाउ कर दे सोलोमन आइलैंड लगाना। एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज थ्रेट टू यूएसए। वाई? बिकॉज यूएसए का यहाँ पर हवाई आइलैंड वगैरह में बेस है। आई होप यू आर अवेयर। सो दिस वाज नॉट लाइक बाय यूएसए कि यहाँ पे सोलोमन आइलैंड में चाइना क्यों डील कर रहे हैं। ओके ना, और ऑस्ट्रेलिया से भी नजदीक है, तो क्या बता रहे हैं कि अभी जो है ना ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बीजिंग जाने वाले हैं अगले महीने। ओके, और उसी से जस्ट पहले चाइना ने कुछ सोलोमन आइलैंड से कुछ लोगों को चाइनीज डेलीगेशन भेजा है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ऑस्ट्रेलिया का जनरली अमेरिका से ज्यादा अच्छा रिलेशन। आई होप यू आर अवेयर ऑस्ट्रेलिया इज मोर इंप्रूव्ड रिलेशन विद यूएसए एज कम्पेयर टू बीजिंग इन चाइना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। तो ये सोलोमन आइलैंड के बारे में थोड़ा सा आप फॉलो कीजिएगा, बिकॉज यस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट इट। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट ही है। सो चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में खास के जो मैरीटाइम सिल्क रूट है, वी हैव डिस्कस्ड इट। सो इसमें द चाइना इज एक्चुअली एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ पोर्ट्स है ना इन द इंडियन ओशन रीजन एंड पैसिफिक रीजन। सो परहैप्स दिस माइट बी वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दैट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग। एक और चीज है, वी आर रनिंग, आपको पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स रन करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ नवंबर में ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। सो डू फॉलो इट, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मोस्ट लाइकली 9 PM पे जाएगा, दैट सेशन वुड बी गोइंग, है ना। सो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे वन शॉट रिविजन इसका फुल प्लेलिस्ट है, इस पे जाके आप ये सारे वीडियोस देख लेना, दैट वुड बी बेनिफिशियल एंड विल बी कमिंग अप विद मोर क्रैश कोर्स एंड ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram and download the BYJU'S exam prep app. Thanks for watching, have a nice day.